Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic replication. So after understanding this topic, you can came to know that the DNA, that is the genetic material that is present in the cell, and that is the genetic material which is responsible for the transmission of the character from one generation to another generation. And when the cell divide, both the cell having the DNA, so how this DNA is doubled or how this DNA is present in both the cell, so this is due to the replication that we are going to discuss. So replication means to make replica. So what is replica? The copy of the exact. Like if we have the DNA like this is the DNA, and if we have the copy of this DNA, then this is the replication. So DNA replication means when the DNA make its own copy, DNA to DNA, that is known as replication. So this central dogma that was given by Crick. The double helical structure of DNA that was given by the two scientists Watson and Crick, but the central dogma that was given by Crick. And what is central dogma? You are aware about that the formation of DNA from DNA, then DNA to RNA, and RNA to protein. This is the central dogma. But we have to discuss the replication, especially the DNA replication. So when the replication of DNA takes place, that is known as the DNA replication, and this DNA replication is of three types that was given by Crick. First is the conservative type, second is dispersive, and third is semi-conservative. So before in the starting, no scientist don't know that what type of replication is there in case of DNA. So firstly, what is the conservative DNA? What is conservative DNA replication? In this conservative DNA, the parental strand remain same. Suppose here that is the parent DNA, and when this parent DNA replicate, there is the formation of the replication fork. Means this DNA is unwind. ये DNA जो है ये ओपन हो जाएगा और एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे replication fork. So here the replication fork is present, and this red color DNA, that is the new DNA, and this black color, that is the parental DNA. So here what happened, there are the two strand, one is the black strand and one is the red. So this is the, both are the new strand and the parental DNA is conserved. मतलब जो पेरेंटल डीएनए ब्लैक कलर का था वो अगले में अलग एक ब्लैक कलर है और एक रेड कलर है. नया जो डीएनए है वो अलग है और पेरेंटल जो है वो अलग है. नेक्स्ट इज द डिस्पर्सिव टाइप ऑफ DNA replication. So in this dispersive type of DNA replication, firstly this parent DNA, and this parent DNA then open, forming the replication fork, and this red color, that is the new strand, and here both the parental DNA and the new DNA intermixed with each other. एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो एक नया स्ट्रैंड होगा वो दोनों की मिक्सिंग होगा, पेरेंटल की भी और न्यू स्ट्रैंड की भी. सो दिस इज द डिस्पर्सिव टाइप ऑफ DNA replication. आफ्टर दैट द सेमी कंजर्वेटिव DNA replication. सेमी मीन्स हाफ, कि जो नया DNA बनेगा उसमें हाफ तो पेरेंट DNA होगा और हाफ नया DNA होगा, जिसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन. और बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये प्रूव हुआ कि DNA रेप्लिकेशन इज नॉट द कंजर्वेटिव टाइप, नॉट द डिस्पर्सिव टाइप, बट इट इज द सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन.
So that we will discuss how this semi-conservative model, so it was proposed by the two scientists that we will going to discuss. So I think you understood. There are the three types of DNA replication. First is the conservative, second the dispersive, and third is the semi-conservative. Now on the basis of the types of the cell DNA replication, so there are the on the basis of the types of the cell DNA replication, so there are the two types of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic means the primitive cell or the old one cell. They have the primitive nucleus, not the membrane bound organelle, and the example is the bacteria, prokaryotic cell. And in case of eukaryotic cell, the plant cell, animal cell, these are the example of eukaryotic cell. So in prokaryotic cell, which type of DNA is present? The circular DNA, and that DNA is not bind with the nucleus. Nucleus is not well defined in them, known as the nucleoid. So DNA is packed in prokaryote in the form of circular loops like this around the positive protein. And in case of eukaryotic DNA, DNA is the double helical structure like this. So when replication takes place, this DNA is unwind, ये open हो जाएगा, and there is the formation of the Y shape structure, fork like structure. So in eukaryotic DNA replication, there is the formation of the Y shape fork like structure is formed, but here the theta like structure is formed in case of prokaryotic. Now Watson and Crick, what they observed means, when they have given the double helical structure, there is the statement given by Watson and Crick, and this statement is that it has not escaped out our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Means what is the meaning of this statement, कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि जब DNA में पेयरिंग होती है, जब DNA की कॉपिंग होती है, तो उसमें जो एक स्ट्रैंड होगा दैट इज़ द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड इज़ द न्यू स्ट्रैंड. द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड separate and act as a template. Means कि अगर इस तरह से DNA है, so this is the first strand and that is the second strand. तो ये जो DNA है, इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो जाएंगे और नए DNA को बनाने के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे. सपोज़ यहाँ पे एक नया DNA बन गया, यहाँ भी एक नया DNA बन गया, दोनों स्ट्रैंड अलग हुए और इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया दूसरे DNA के लिए, और इससे जो नया DNA बना उसमें आधा पेरेंटल टाइप है और आधा उसमें नया बना है. तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे दैट व्हेन द DNA replication takes place, both the strands separate and there is the formation of the new strand with respect to the template strand, and this new strand is complementary to the parent strand, and this model is known as the semi-conservative model of DNA replication. Now the experimental proof of semi-conservative model of DNA replication. Now the semi-conservative model of DNA replication. So this semi-conservative model, this was given by Matthew Meselson and Franklin et al. In 1958. So what they have done, let us discuss. So they have taken the two compound. First is the ammonium chloride
and second is the cesium chloride. Firstly, try to understand the role of these two compounds. Ammonium chloride having the nitrogen, and the basic structure of DNA also have the nitrogen because the nitrogenous bases are present. The backbone of the DNA, that is sugar and phosphate, and the base pairs are present, and these base pairs are nitrogenous base. So for that we have taken ammonium chloride, and second thing is cesium chloride. Cesium chloride, that is the compound that is used for the density gradient, and it is the fluorescent, means हमें इसके प्रॉपर एक जो बैंड्स हैं DNA के वो दिखेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ लेट अस डिस्कस. So these two scientists, they have done experiment on many organisms in the plant cell, animal cell also, and also on the E. coli, that is known as the Escherichia coli, that is the bacteria. So what they have done, for many generations they have grown the E. coli cell in the medium containing ammonium chloride. This ammonium chloride, and in this ammonium chloride, this nitrogen, that is the heavy isotope of the nitrogen. Normally the atomic number of nitrogen, that is 7, and the atomic mass is 14 AMU, the atomic mass unit, that is the normal. But if we are taking the nitrogen 15, so that is the isotope of the nitrogen, and that is heavy as compared to nitrogen 14. So for many generations they have grown this E. coli in the medium containing the heavy nitrogen, that is ammonium chloride, and N15 is here. So what happened here, now both the strand of the DNA having the nitrogen 15, because for the long generation they have grown in this medium, and this E. coli cell, it can divide within 20 minutes. So what they have observed, so when the first cell, after growing so many time in the heavy isotope, in the presence of the heavy isotope, now it is grown in the ammonium chloride having the 14 nitrogen here, 14. So what happened, when both the strands separate, these two strands, this red, that is the template for the new one, that second also the template for the new one, and there is the formation of the both the strand. Now two DNAs are here, one is the red in color and one is black in color. So this black in color, that is 14, and this red in color, that is 15, 14 and 15. So what we have observed, that here the one strand that is of 14 isotope and one strand that is of 15. So here when they have done the centrifugation, so what is centrifugation? Centrifugation is a process in which we are mixing something, and due to the gravitational force, जो हैवी सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, जो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वी कैन सेपरेट दैम. तो फर्स्ट में क्या था, दोनों ही हैवी थे, तो डेंसिटी में ये जो नीचे की साइड आए उस जब हमने उसको सेपरेट किया, सो हेयर द हैवी नाइट्रोजन 15 बिकॉज बहुत सारी जनरेशन से हम उसी मीडियम में उसको ग्रो कर रहे थे, तो कोई और नाइट्रोजन सोर्स नहीं था, N15 ही था, तो सेल के अंदर भी N15 ही इनकॉर्पोरेट हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको जब सेल डिवाइड किया तो उसको हमने अमोनियम क्लोराइड 14 में ग्रो किया, तो अब वहाँ पर नाइट्रोजन सोर्स N14 है, तो इस DNA ने जो नया स्ट्रैंड बनाया उसमें क्या होगा N14 और इसमें भी N14, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड 15 का हो गया, एक 14 का, तो मतलब जो डेंसिटी आई वो कैसी होगी, हाइब्रिड. अब ये नीचे की साइड नहीं आया क्योंकि अब इसका जो वेट है वो N14
और N15 के बीच का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हाइब्रिड। आफ्टर दैट इन द सेकेंड जनरेशन, जो आफ्टर 40 मिनट्स, क्योंकि नेक्स्ट 20 मिनट में जो वो दोनों सेल बनी हैं वो फर्दर डिवाइड कर जाएंगी, एंड देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द 4 DNA हेयर। एंड नाउ व्हाट इज़ द रिजल्ट हेयर, वी हैव observed or we have get 2 types of band here. One is of the light band and one is of hybrid. So how this come? Suppose here the 14 and the 15, so both the strands are separated. Again also both the strands are separated, but here the medium is ammonium chloride 14. So if 14 is here, तो यहाँ पर जैसे ये 14 जो है वो अलग हुआ, 15 वाला भी अलग हुआ, 14 वाला भी, तो 14 वाला जो था उसके साथ 14 ही लगा, 15 वाला है उसके साथ 14, तो यहाँ पर बीच वाले जो है ये हाइब्रिड बने, क्योंकि यहाँ पे इस साइड जो है 14 14, ये हो गया 14, ये 15, 14 15, 14 एंड 14। तो हमें जो बैंड्स मिले यहाँ पे, 2 तो हैवी जो लाइट बैंड्स थे और 2 हाइब्रिड। हैवी बैंड्स हमें यहाँ पर नहीं मिले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी 15 15 वाला नहीं बना, 14 और 15 या फिर 14 और 14। सो नाउ द 2 बैंड्स वी गेट, one is of light and one is of hybrid, and this cesium chloride that was used for this density gradient, and we get the 2 bands in this case. So I think you understood the semi-conservative model of DNA replication. So what is semi-conservative model? That कि जब DNA जो है सेपरेट होगा तो उसके साथ जो नया DNA बनेगा वो एक, उसमें एक पेरेंटल DNA होगा और एक नया DNA होगा। अगर हम उसको कोई भी नाइट्रोजन सोर्स हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि DNA को और कहीं से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, नए स्ट्रैंड बनाने के लिए उस पर नाइट्रोजन बेस लगाने के लिए कहीं और से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, तो जब यहाँ पर ओनली 15 था तो दोनों स्ट्रैंड में क्या हुआ, 15 ही लिया हमने। फिर उसके बाद 14 जब हमने इसको प्रोवाइड किया तो एक स्ट्रैंड बना 14 का और एक स्ट्रैंड बना 15 का। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट फर्दर 20 मिनट्स जो सेकेंड जनरेशन है उसमें 2 टाइप्स के जो बैंड आए। सो व्हेन वी हैव डन द सेंट्रीफ्यूगेशन, सो दिस इज़ द डायग्राम of the separation of the DNA by centrifugation। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने सेंट्रीफ्यूज किया इसको, इस पूरे जो हमने लिया था ये DNA, इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो हैवी DNA था वो तो नीचे रह गया और जो लाइट DNA है वो ऊपर आ गया। बट हमने सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे हैवी DNA नहीं है, यहाँ पे 2 टाइप के DNA हैं, एक DNA है हाइब्रिड और एक है लाइट। तो जो हाइब्रिड हुआ वो बीच में रहेगा और जो लाइट है वो ऊपर आ गया। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन सटहाल in 1958। थैंक यू।